Hello students, this is Sandeep Agarwal from Inside Learning Academy. So today we are going to discuss one more topic, that is about the rocks. What do you mean by rocks? From which material rocks are made up of, and the types of rock. In the types of rock we are going to study igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. What actually it is, how it is formed, that we are going to discuss on this slide. So now let us first discuss what do you mean by rocks. We should know the difference between the rocks and the minerals. What do you mean minerals? Minerals are also of two types, metals and non-metals. So we will discuss these all aspects very elaborately. So now let us start with the term rock. So rocks are basically the natural occurring substance which occurs beneath the earth's surface on the surface. Rocks are mainly made up of minerals, एंड जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, मेटल या फिर नॉन मेटेलिक. सम रॉक्स आर मेड अप ऑफ वन मिनरल एंड मे सम रॉक्स बी मेड अप ऑफ टू और अदर minerals. So you may find many types of minerals in many types of rocks. So on the basis of its formation, we have divided the rocks into three types. We have three classification of rocks: igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. Today we will discuss elaborately on the igneous rock. But before we start about the igneous rock, I would like to tell you rock takes million of years to form, and its formation is a continuous process. It's a continuous process. It will gradually form, and it is a part of mountain also. So now today we will discuss about igneous rock. Basically what is igneous rock? What do you understand by igneous rock? igneous का क्या मतलब होता है? igneous मतलब ignite, मतलब it is related to some heat कहाँ से आती है? जो magma, द मैग्मा विच इज़ अपवेलिंग, जो कि नीचे से अर्थ सरफेस पे आती है फ्रॉम द मैंटल, जो आपकी क्रस्ट लेयर तक आती है, लिथोस्फेयर तक आती है, अपवेलिंग ऑफ मैग्मा, विच आई विल शो यू इन अ डायग्राम कि हाउ इट कम्स फ्रॉम द beneath द अर्थ सरफेस एंड रीचेस टू द अर्थ सरफेस, एंड इट गेट्स स्टार्ट डिपोजिटिंग लेयर बाय लेयर एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग igneous rock. बिकॉज आफ्टर कमिंग टू द अर्थ सरफेस उसकी कूलिंग स्टार्ट होती है. पहले तो क्या हो रहा है, वो नीचे से गर्म मैग्मा के फॉर्म में आ रहा है. जब वो अर्थ सरफेस के ऊपर आता है और वो जब डिपॉजिट होने लगता है तो इट इज़ कॉल्ड लावा. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मैग्मा एंड लावा. मैग्मा इज below the earth surface and lava is above the earth surface. So जब वो मैग्मा अर्थ सरफेस पे आता है and because of the temperature it starts cooling down and forming layer by layer, it takes million of years, then it is called igneous rock. So basically igneous rock is a rock which is formed because of the upwelling of the magma. Upwelling means जो कि चीज़ नीचे से ऊपर आई है. Are you clear with this? Okay. Now, it is important to know that we have categorized igneous rocks into two types. Number one, extrusive rocks, and number two is intrusive rocks. Now, the name itself helps you to decode the meaning of extrusive and intrusive. Intrusive rocks का मतलब क्या होता है? Interior. It means the rock is forming below the earth surface that you cannot see by your naked eyes. It is not exposed to the earth surface. Extrusive igneous rocks are those rocks which are formed above the earth surface, which you can see from your naked eyes. This is the basic difference. If someone asks you what is the basic difference, interior में जो igneous rocks बनती हैं, इंटीरियर मतलब नीचे जो बनती हैं उसको कहते हैं हम इंट्रूसिव, और जो रॉक्स ऊपर आके डिपॉजिट होके बनती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव igneous rocks. आर यू क्लियर? अब हम जो इंट्रूसिव की अगर हम बात करें, आई विल शो यू दीज इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ igneous rock in the photograph which you can see in the slide also. And in the intrusive igneous rock, it is also categorized into two types. One is plutonic and second is hyperbasal rock. Now that is very important. What is the basic difference between plutonic and hyperbasal? See, प्लूटोनिक रॉक्स और हाइपरबेसल की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इट बिलोंग्स टू द इंट्रूसिव igneous रॉक. तो इंट्रूसिव के अंदर भी दो तरीके की रॉक्स की हम बातें कर रहे हैं, एक तो है प्लूटोनिक और एक है हाइपरबेसल. तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लूटोनिक एंड हाइपरबेसल? डिपेंड्स अपॉन द हाइट, डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ ऑफ फॉर्मेशन. कौन कितनी डेप्थ में बन रहा है इस चीज़ पे डिपेंड करता है क्या, कि वो
प्लूटोनिक है या फिर हाइपरबेसल है। तो अगर आपकी जो कूलिंग हो रही है, इफ़ योर इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड डीप विद इन द क्रस्ट, क्रस्ट के बहुत इनसाइड में अगर बन रही है तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्लूटोनिक बोलते हैं। और अगर वो कुछ इंटरमीडिएट डेप्थ तक बनते हैं, क्योंकि कुछ तो डेप्थ होगी बिकॉज वो नीचे बना है, ऐसा तो है नहीं कि टू द नियर सरफेस अर्थ सरफेस बने। सो या तो तुम्हारे पास इंटरमीडिएट होगी या फिर डीप होगी। अगर इंटरमीडिएट बीच की डेप्थ पे अगर वो कूल होके एक रॉक बन रहा है तो देन इट इज़ कॉल्ड हाइपरबेसल। और अगर वो बहुत ज़्यादा डीप में बन रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्लूटोनिक। तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैन यू टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक plutonic intrusive igneous rock? Yes, it's granite. Granite is one of the example of plutonic. Okay, I think you are clear with this. Okay, now one more classification is done. It is based upon the percentage of silica content. Silica content is very 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 important content. It is very important mineral, or it is one of the important mineral which comes from the core, mantle, and reaches up to the crust. Silica is very important, very important. So on the basis of silica content we have classified the, this is called chemical classification basically, you can say, because it's a chemical, silica is a chemical. So अगर आपकी रॉक के अंदर 66% से ज़्यादा सिलिका है देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक रॉक। और अगर उसका 50 to 60% समथिंग है तो इट इज़ कॉल्ड बेसिकली इंटरमीडिएट रॉक्स। और अगर वो 45 से 50% से इतना से 40 to 50% यू कैन से, देन इट इज़ कॉल्ड बेसाल्टिक rocks. So this is main classification of intrusive rocks. Now what is left? Extrusive rocks. What do you mean by extrusive rock? Extrusive rocks are those rocks which are formed on the earth surface, जो कि आपकी क्या बनती हैं, अर्थ सरफेस के ऊपर बनती हैं। दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स एंड बेसिकली दे आर वेरी क्लासी टाइप एंड वेरी फाइन क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। दे आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव रॉक्स। और क्योंकि ये तुम्हारे ऊपर तक आ चुके हैं, बिकॉज इट हैज़ कम टू योर अर्थ सरफेस, सो दीज एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में ऑल्सो बी कॉल्ड एज वॉल्केनिक रॉक्स, क्योंकि ये वॉल्केनो ही तो है। मैग्मा क्या है, मैग्मा का जो अपवेलिंग हो रहा है इट इज़ अ पार्ट ऑफ वॉल्केनो। वॉल्केनो में नीचे से क्या आता है, मैग्मा ही आता है, ठीक है। तो इसका क्या एग्जाम्पल है एक्सट्रूसिव रॉक का? एक्सट्रूसिव का अच्छा खासा एग्जाम्पल आप बोल सकते हो बेसाल्ट। ग्रेनाइट हमने किसका बताया था आपको, इंट्रूसिव का बताया था, वो भी प्लूटोनिक का। एंड इन केस ऑफ एक्सट्रूसिव रॉक इट इज बेसाल्ट। व्हाट इज बेसाल्ट रॉक? बेसाल्ट रॉक यू शुड नो कि हमारे जो, नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू 1-2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच यू शुड नो कि लिथोस्फीयर के अंदर हम लोगों की मेजरली जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ओशनिक और कॉन्टिनेंट। हम जिस कॉन्टिनेंट, जिस लैंड मास में रह रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट। और जो हमारे सराउंडिंग में वाटर बॉडीज, बिग ओशंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इट इज़ बेसिकली अ ओशनिक प्लेट। सो ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलते हैं इनको। लिथोस्फीयर इज सब डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक प्लेट। तो जो ये कॉन्टिनेंट जो है जिसके ऊपर हम लोग रह रहे हैं, कॉन्टिनेंट जो लैंड मास है, ये किससे बना होता है, एंडीसाइड या फिर ग्रेनाइट। और बाकी ये जो ओशनिक प्लेट है ये क्या होता है, इसका नेचर बेसाल्टिक होता है। दिस इज सुपर्ब इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड इन एनी एग्जाम इन योर स्कूल टाइम, इवन इन द UPSC ऑल्सो समटाइम इट आस्क, इन एनी एग्जाम इट कैन बी आस्क्ड कि व्हाट इज द नेम ऑफ द रॉक from which oceanic and continental crust is made. Crust is because it is made on the crust. So I hope you are clear with this igneous rock. In the next slide we are going to, in the next module we are going to discuss about the sedimentary rocks, what it is and how it is formed. And in this video I have, meanwhile in between I have uploaded some pictures to make you more clear about the how it actually forms, to make you feel better. So please pay attention and learn it. Thank you so much.